Salam everybody, I hope you're all well. Can you hear me? Assalamu alaikum, Aima, Zafira, Khushbak, Chashman, Ameed, Abdullah. I hope you guys are doing well. And I just wanted to do this paper with you of paper 2 hai. Acha, jo link hai again, it's in the description of the video. So if you can click over there and download the paper. I am going to start the summer session in June, on the 7th of June. आज मेरे ख्याल है आजकल में लग जाएगा. Assalamu alaikum Hamza. Aj I will be taking the October-November session. Yes. Welcome to the class, guys. And जल्दी से पेपर डाउनलोड करें. पेपर डिस्क्रिप्शन में पेपर 2 कर रहे हैं. पेपर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में. And again, we'll put the marking scheme right after the paper ends. Okay? Please have a look at the first question. Assalamu alaikum Sadna. Hasib, good to see you. Likewise. चलें शुरू करते हैं with the first question. And the first question says, बड़ा सिंपल सवाल है इसके स्केलर और वेक्टर के डिफरेंशिएट कर दें. So you all understand that energy, power and work are scalar. Acceleration is vector, force is vector, and momentum is going to be vector, right? In part B, they say that you have this sphere which is attached to a cable at the bottom of a river. The sphere is in equilibrium, very important. Sphere is in equilibrium with the cable at an angle of 75 degrees. अच्छा, केबल में जो टेंशन है, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? Can you tell me in the chat? केबल में जो टेंशन है, उस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? Away from the object. Yes, so the tension should be this way. This is the direction of tension, which should be away from the object. Well done, Khadija Chashman. अब उससे कहे कि स्फेयर का जो रेडियस है वो 23 सेंटीमीटर है. स्फेयर का जो डेंसिटी है दैट इज 82 किलोग्राम per meter cube. Find the weight or show that the weight is 41 newtons. So for this, what you do is you do mass is equals to density into volume. The density is 82. Volume of a sphere आपने प्लीज याद रखना है, पेपर में गिवन नहीं होगा, वो होता है 4/3 pi r cube. So 82 into 4/3 pi r cube. The radius is in centimeters. Make sure you convert it to meters. So 82 into 4/3 pi into 23 into 10 to the power minus 2 whole cube. इसको solve करें please and tell me what the mass turns out to be in the chat. Very quickly. Taimur, Assalamu alaikum. Likewise, miss you, buddy. I hope you're doing well. All you've graduated. Hanji, so what does the mass turn out to be? Taimur, आप ही बता दो इनको mass कितना आता है. So the mass turns out to be
4.18 kg. Now, you have to carry the weight. Weight is mg. So 4.18 into 9.81. Let's do it. 4.179. Yeah, 4.179 is also right. 4.18 into 9.81. Your answer should be 41 newtons. Exactly, Fatma. मैं बिफोर आई गो अहेड मुझे जल्दी से रिमाइंड कराएं कि आपका आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सेप्टेबल होता है हमें इन द चैट योर आंसर इज एक्सेप्टेबल टू अस इन हाउ मेनी एसएफ मिनिमम एंड मैक्सिमम द आंसर इज 2 to 3 SF ओके कोई भी आपका आंसर होगा वो हमें 2 to 3 SF में एक्सेप्टेबल होगा ये याद रखना इस बात को सही है those of you who've just joined the paper is in the description of this video just download the paper from there and make sure that you're going with me now they're saying that the tension of the cable is 290 determine the upthrust reach 2 to 3 SF में कबूल होगा कई दफा 3 SF में भी आंसर गिवन होता है सही है so 2 to 3 SF is acceptable. The tension in the cable is 290, determine the upthrust. Let's go back. So अभी आपने ये निकाला है कि इसका जो weight है वो है 41 newtons. The tension in the cable is 290. I can rub this and I can write 290. And the sphere is in equilibrium and they're asking you for the upthrust. Upthrust is going to be acting upwards. Upthrust जो होता है वो ऊपर की तरफ act कर रहा होगा ये 290 नीचे खींच रहा है लेकिन एक एंगल पे खींच रहा है ये 41 straight down खींच रहा है ये upthrust is straight up. So if I take this picture, let me copy paste it to the question. गौर से देखो upthrust ऊपर की तरफ है weight नीचे की तरफ है 290 नीचे की तरफ है 290 एंगल पे है so what should I do with 290 290 अगर किसी ने ये कहा ना if somebody says 290 plus 41 तो बच्चे आप गलत हो the reason is आपको समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन दोनों एरोस का सेम नहीं है ये एक एंगल पे इट्स नॉट स्ट्रेट डाउन ये इस तरह नहीं है कि 290 नीचे और 41 नीचे अगर इस तरह दोनों नीचे होते तब आप ऐड करते well done Akanksha what you do is you'll make components of 290 so 290 का एक component बनेगा 290 sin 75 और दूसरा component बनेगा 290 cos 75 so you should take the component which is parallel to weight which is 290 sin 75 right? So 290 sin 75 is vertically downward. 41 Newton is also vertically downward. So अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अप थ्रस्ट मिल रहा है ऊपर की तरफ अब इसको दो फोर्सेस नीचे खींच रही हैं एक नीचे की तरफ जो खींच रही है फोर्स oops that is 290 sin 75 और जो दूसरी फोर्स सीधा नीचे खींच रही है that is 41 newtons. So your up thrust is going to be 290 sin 75 plus 41. So what's your final answer? Your final answer would be 321 newtons, which you can write as 320 newtons. अच्छा अब इसको हम लिख देते हैं ठीक है Explain the origin of upthrust acting on the sphere. Upthrust is due to the pressure difference between the top and the bottom. Upthrust is due to the pressure difference between the top
and the bottom of the sphere. सही है खदीजा पेपर 5 की स्ट्रीम होगी at 5 p.m. Paper 5 will be at 5. ये वाला क्लास खत्म हो जाएगा at 4:30. I'll take a half-hour break and we'll start at 5 again. सही है चलें जी. हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं अब्दुल्ला यू आस्क्ड हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब आपको टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस प्रेशर मालूम हो तब यूज करते हैं सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी हाइट कितनी है और मैं आपको बता देता हूं कि इसका बेस एरिया कितना है तो जो हाइट है इससे आप निकालोगे प्रेशर ये रोज ये चार्ज ये दिस इज गोइंग टू बी प्रेशर डिफरेंस और जब प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया करोगे तो फोर्स आ जाएगी दिस फोर्स विल बी योर अप thrust because this is going to be pressure difference between the top and the bottom so pressure difference into area करो उससे force निकल आएगी that force will be up thrust I hope that you understand now question number 2 define acceleration is the rate of change of velocity a ball is kicked from the horizontal ground towards the top of a vertical wall. The horizontal distance between the initial position of the ball and the base of the wall is 24 meters. Okay. The ball is kicked with the initial velocity v. उसने नहीं बताई कितनी है, but angle बता दिया 28 है. The ball hits the top of the wall. So यहाँ तक ball पहुंच जाती है after a time of 1.5 seconds. Air resistance may be assumed to be negligible. So इस statement का मतलब क्या होता है? Air resistance may be assumed to be negligible. What does this mean? What does this statement mean? Can you tell? Shabash. When the air resistance is assumed to be negligible, what does it mean? It means horizontal velocity is constant, and it also means that your vertical acceleration is going to be 9.81 meters per second squared. इसका ये मतलब भी होता है दो मतलब होते हैं एक वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.81 होगी और दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ठीक है अब calculate the initial horizontal component of the velocity. Now, initial horizontal component of velocity you normally consider to be v cos theta. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि v नहीं है एंगल है तो हमें क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि अच्छा डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल हमारे पास टाइम भी है प्लीज याद रखें हॉरिजॉन्टल स्पीड इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओवर टाइम horizontal speed is horizontal distance over time. So horizontal distance आपका जो है that is going to be 24. The time is going to be 1.5. So 24 को 1.5 पे डिवाइड कर दें 24 को 1.5 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा When you divide 24 by 1.5 what do you get शाबाश you will get 16 meters per second. Okay. Now, next they say show that the initial vertical component is 8.5. अब ये देखो ये 16 जो है ये horizontal component है. This is 16 ये horizontal component है. What will the vertical component? वो पूछ रहे हैं ये बताएं what is the vertical component Vy? You found the horizontal component. You find the vertical component. You can see that this is going to be a right angle triangle, right? So this is Vy, this is angle 28. So through proper brushing, I remember from my O levels, my teacher taught me tan theta through proper brushing. So tan 28 is equals to proper brushing.
So Vy will be 16 into tan 28. करो 16 into tan 28 क्या निकलता है? I think you should get 8.5. Yeah, you end up getting 8.5 meters per second. सही है. अब calculate the time taken for the ball to reach the maximum height above the ground. The maximum height above the ground. So they're asking you to calculate this height. हादिया, which formula? कौन से वाले formula की बात कर रही हो? Hadia, which formula are you talking about? Are you talking about tan? हाँ, Vy over 16. अच्छा, तो उसने कहा कि vertical component निकालना है. अब vertical component usually करने के लिए हम करते हैं V sin theta. Again problem ये है कि V नहीं है. ये वाला V होता तो मैं सीधा सीधा V sin 28 करता, मेरा आंसर आ जाता. लेकिन ये V नहीं है, इसलिए मैंने किया ये कि मैंने कहा कि अच्छा निकाला क्या पीछे वाले पार्ट में, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट निकाला ना पीछे वाले पार्ट में, which is 16. वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालना है. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है और एंगल है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया. दिस इज V. I know for a fact that this is 16, this is 28. I just want to find what is this vertical component Vy. So I use tan 28, tan is equals to perpendicular over base. I hope it's clear now. Acha. Now calculate the time taken for the ball to reach maximum height above the ground. So maximum height above the ground निकालने के लिए you should use the equation 2as equals v squared minus u squared. Right? You could use um, dark lord. S equals to half 80 स्क्वायर में हमें टाइम कैसे मालूम होगा कि कितने टाइम में वो पहुंचा है मैक्सिमम हाइट पे. अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग, टाइम ही तो निकालना है. अच्छा, मैं हाइट निकालने चला था, टाइम निकालना है. सो यू कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80. V vertical, u vertical, a vertical. Your final vertical speed will be 0 at the top. Initial vertical speed हमने निकाली है ये 8.5 minus 9.81 into t. So from here you'll get the time as 8.5 divided by 9.81, which will be 0.87 seconds. Yes, Dark Lord, I was saying that when you use the equation s equals to half 80 square, मुझे ये बता दो, ठीक है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, डिस्टेंस कितना लोगे, हमें वो हाइट नहीं मालूम. दैट्स व्हाई s equals to half 80 square would be slightly difficult to use. सही है, दैट्स व्हाई बेहतर है इसको ना यूज करो. 2 मार्क्स हैं, सीधा कैलकुलेट कर लो कि जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वर्टिकल स्पीड विल बी 0. इनिशियल वर्टिकल स्पीड उसकी 16, फाइनल वर्टिकल स्पीड 0. टाइम निकाल लो, टाइम वुड बी v is equal to u plus 80. The time would be 0.87 seconds. समझ आ गई सबको? यहाँ तक मेरे साथ हैं everybody? Okay. Moving on. Now this graph. The ball is kicked at time t is equal to 0. On figure 2.2, sketch the variation with time of the vertical component of velocity. अच्छा, अब try to understand that the vertical component of velocity आपने बनाना है from t is equal to 0 till it hits the wall. मैं अगर आपको डायग्राम इधर बना के दिखाऊं तो आपने बॉल को यहाँ से किक किया था, ये ऊपर गया और यहाँ पे आके इस दीवार को हिट कर गया, वॉल को.
और ये जो टाइम गुजरा है ये 1.5 सेकेंड्स गुजरा. चश्मान, वी डोंट ऑलवेज टेक इट टू बी नेगेटिव. मतलब एक assumption मैं लेता हूँ और वो ये है कि upward direction is positive. So whenever upward direction is positive, I know gravity is pointing down. That's why I take it to be negative. मैं अब अपने ज़हन में naturally, since my O levels and A levels, I've been taking the upward direction as positive. Therefore, any vector which is pointing down will be negative. That's why gravity is mostly negative in my cases because I'm assuming the upward to be positive. सही है. जिस तरह आपने vertical velocity जो यहाँ पे निकाली, I think that was 16, तो वो 16 आप यूज करोगे एज पॉजिटिव अगर आपको कहीं पे यूज करनी हो. सही है. ये पीछे वाले पार्ट में 16 तो नहीं निकाली आपने, 8.5 निकाली थी. सो 8.5 जो है वो आप पॉजिटिव यूज करोगे. सही है. ये आपने ये निकाली हुई है. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 8.5. So 8.5 is positive, gravity is negative because 8.5 is pointing up. Yes, Dark Lord, yes, you can use this formula. अब 8.5 की स्पीड से आप स्टार्ट करते हो. प्लीज जरा गौर से इस ग्राफ को देखिएगा. मैं जूम इन थोड़ा करता हूँ. This is 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So 10, 9, this is 9, and this is 8. So this is 8.5 over here. This is 8.5 at t equal to 0. In the next part, you also calculated the time to reach maximum height. Now, when it reaches maximum height, can you tell me what is the vertical speed at the maximum height in the chat? Very quickly, please. What is the maximum speed? What is the speed at maximum height? So t is equals to 0.87 seconds पे maximum height पे वो आ जाता है. तो जब maximum height पे आ जाता है तो उधर speed कितनी होती है? उधर speed आपकी 0 meters per second होती है. ठीक है. So आपने क्या करना है? आपने अपने graph पे जाना है and you'll go to 0.8. You'll say this is 0.8, 0.81, or 0.82, 0.84, 0.86, 0.88, 0.9. So 0.82, 0.84, 0.86, 0.88. आपको चाहिए था 0.87, so 0.87 should be in the middle of these two. Assalamu alaikum, Abdullah, I'm well. So 0.82, 0.84, 0.86, 0.88 और 0.87 बीच में. और 0.87 पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? 0. तो ये आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है यहां से लेके यहां तक, और वही स्ट्रेट लाइन आपने एंड तक एक्सटेंड करनी है जब तक वो बॉल दीवार को हिट ना करे. अब वो दीवार को कब हिट करती है, किस टाइम पे हिट करती है, वो टाइम हमें मालूम था ना, 1.5 सेकेंड्स. ये सो आपने इस स्ट्रेट लाइन को 1.5 सेकेंड तक चलाना है. डू अंडरस्टैंड? Because they're saying until it hits the wall. Now, when it hits the wall, the time is 1.5. So 1.42, 1.44, 1.46, 1.48, 1.5. This is 1.5. So I have to extend the straight line all the way to 1.5 seconds. Why a straight line? Ali, because acceleration was constant, remember? Air resistance was negligible, acceleration was constant. That is why a straight line. Air resistance इग्नोर की हुई है ना, एक्सेलेरेशन विल बी 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू. जब भी एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे याद रखो स्ट्रेट लाइन बनेगी. सो 8.5 से अपने ग्राफ को शुरू करें, इसको 0.87 के थ्रू पास कराएं, ये जो ग्रीन डॉट आपको नजर आ रहा होगा, और इसके थ्रू extend it all the way till 1.5. And this is your. All right, so the key points are 8.5. It should cross the x-axis at 0.87, and it should go all the way till 1.5 seconds. Because 1.5 seconds पे वो दीवार को hit कर जाता है, उसने कहा until it hits the wall. So this is going to be your line. Is this clear, everyone? And it's a straight line because we've assumed acceleration to be constant. It was negligible in the question.
ठीक है, चलो। ये यूजुअली ग्राफ वाले क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगते हैं, बट एक्चुअली आसान होते हैं क्योंकि आपने सारा काम देखो पीछे किया हुआ था. यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वर्टिकल वेलोसिटी initial, you had already calculated the time, so literally you just have to pick up these values and put them on the graph and just make sense कि अच्छा 0.87 seconds यहाँ पे होगा तब वो स्पीड जीरो होगी, 8.5 शुरू में था तो स्पीड मैक्सिमम थी और टाइम टी जीरो जीरो पे थी बिकॉज इट वाज इनिशियल. सो स्ट्रेट लाइन बनाई और अब कहाँ तक बनाए स्ट्रेट लाइन, जब तक वो दीवार को हिट नहीं करता. दीवार को कब हिट करेगा, 1.5 सेकंड. ये भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि 1.5 सेकंड पे उसने दीवार को हिट करना है. सो 1.5 सेकंड तक वो स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करना है. सही है. Also they have said that the upward is positive, ये लिखा हुआ है. That is why हमने positive 8.5 से शुरू किया है. मुझे कोई बता सकता है अगर वो कहता assume that velocity is negative when in upward direction, तो ये ग्राफ कैसा बनता? अगर कहता है assume velocity is negative when in upward direction, then what would the graph look like? If they had said assume velocity is negative when in the upward direction, तो ग्राफ कैसा लगता? Can somebody guess? If this was the case, then your graph would have been like this. You would have started with minus 8.5, फिर 0.87 पे 0 और यहाँ पे 1.5 seconds. Exactly, Aisha. सही है. I hope that this is clear. चलो. Use your information in B to determine the maximum height of the ball above the ground. So maximum height of the ball above the ground. You are looking at the area under the graph, this height. You're looking at this point, the maximum height above the ground, the area under the graph. So area under the graph किस तरह कैलकुलेट करेंगे? half into base into height. So half into 0.87 into 8.5. सही है. अब half into 0.87 into 8.5 करो. Your answer should be 3.69, which आप 3.69 भी लिख सकते हो और आप उसको 3.7 भी लिख सकते हो. I hope that this is clear. All right, moving on. The maximum gravitational potential of the ball above the ground is 22 joules. Calculate the mass of the ball. So, change in potential energy is equals to mg delta h. So, 22 is equals to mass into 9.81 into height, which is 3.7. Easy, right? Honey, the classes are starting, inshallah, on the 7th of June. वो मेरे ख्याल है कल announce हो जाएगा on the social media channels. 22 divided by 9.81 into 3.7. Your answer should be 0.606, which is 0.61 kg. तो यहाँ से mass निकल आएगा 0.606 kg, जिसको आप 0.61 भी लिख सकते हो. Sadhana, you're saying v square is equals to 2as. I have the energy, right? तो मैं उसको use करके क्यों ना निकालूं? ठीक है. Now, part D. Greater mass is kicked with the same velocity as the ball in B. State and explain the effect, if any, of the increased mass on the maximum height reached by the ball. Assume air resistance is negligible. G. Assuming air resistance is negligible, should there be any effect due to the mass?
assuming air resistance to be negligible, should there be any effect due to the mass? जब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कहोगे तो आपका सीधी सीधे आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और इट इज अनचेंज्ड. मतलब ये कि अगर वो बॉल आपने बड़े मास की हो या छोटे मास की हो और आपने उस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है. जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.81 ही रहेगा, there will be no effect on maximum height. खतीजा, मैक्सिमम हाइट कम तब होगी जब ये एक्सेलरेशन चेंज हो जाए. मतलब आप कहोगे जी ये मैथ ज्यादा हो गया है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है ना ये 9.81 नहीं है, ये कोई हो गया 2021 डाउनवर्ड्स. जाना आपने ऊपर है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, अब 21 हो गया मैथ्स बड़ा करने से, हम मान जाएंगे कि मैक्सिमम हाइट कम हो गई है. लेकिन जब हम कह रहे हैं कि दोनों को नीचे की तरफ ग्रेविटी जो पुल कर रही है वो सेम है, तो what do you think? Should there be an effect on the maximum height? Absolutely not. Air resistance negligible रखने का मतलब ही ये है कि mass का कोई इफेक्ट नहीं है. Do you understand? Dark Lord. There will be Rami. There will be no effect on the time either. There will be no effect on the time either. All right. चलें. Perfect. आगे चलते हैं. Question number 3. State the principle of conservation of momentum. So principle of conservation of momentum ये कहता है that the total momentum before collision must be equal to the total momentum after collision. In reality, Dark Lord, we have air, right? तो in reality ऐसा नहीं होता. ये सिर्फ वैक्यूम के अंदर हो सकता है. उसे you're saying momentum की वजह से डिफर करेगा? नहीं, क्योंकि मोमेंटम की वजह से एयर रेजिस्टेंस आनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा. कैरी द टोट अच्छा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया. Two blocks A and B are on a frictionless horizontal surface and they're connected by the spring. The spring is extended as you can see. Block A has mass 4 kg, block B has mass 6 kg. This is the force extension graph. It's okay that the two blocks are held apart so the spring has an extension of 8. Show that the elastic potential energy is 0.48 joules. So, elastic potential energy अगर आपको कह दे वो शेड करने को 8 सेंटीमीटर पे, तो आपने ये वाला एरिया शेड करना है. This area. This is the area that you're shading, okay? And what is the value? ये लाइन नीचे बन गई है, इस लाइन को सही तरह बनाते हैं. Still down. Here we go. Okay, so this is 10, 11, 12. हाँ बिल्कुल. Total momentum before collision must be equal to total momentum after collision for an isolated system. बिल्कुल ये लिखना है, इसका भी एक मार्क होगा. 100% लिखना. अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये 12 है, ये हाइट है. अस्सलाम वालेकुम मुस्कान. Horizontal is 8 centimeters, so elastic potential energy निकालनी है. Elastic potential energy is half into base into height. So 1/2 of 8 into 10 is per minus 2 into 12. करें जरा सॉल्व इसको.
half into 8 into 10 to the minus 2 into 12, and your answer should be 0.48 joules. I hope you guys are with me so far. ये prove हो गया? I get that the blocks are released from rest at the same instant. When the extension of the spring becomes 0, block A has speed VA and block B has speed VB. Assalamualaikum, Rafe. Yes, Sadna, absolutely. For the instant when the extension of the spring becomes 0, use the conservation momentum show that this is the ratio. अब उसने आपको restrict कर दिया है कि भाई conservation of momentum use करना ही करना है. So conservation of momentum use करने का मतलब क्या है? मतलब आपको वो equation use करनी पड़ेगी m1u1 plus m2u2 equals m1v1 plus m2v2. ठीक है. अब जो before they were released, ये masses मेरे हाथ में थे. Before they were released, they were at rest. So what is the total initial momentum? Can somebody tell? Before they were released, the blocks were in my hand. They were before they released. So what was the total momentum before? Assalamualaikum Abdullah. Arij, I think you're asking for the previous part. Half kx be used half kx square hoti equation. Half kx nahi hoti. So before they released the total momentum, thank you Ramin, it is 0. And now after the release, एक ब्लॉक आ रहा है इस साइड से और दूसरा ब्लॉक आ रहा है इस साइड से. That's it. This is A, this is B. A की स्पीड कितनी थी? A की स्पीड हमें निकालनी है, बट A का मास है 4 kg VA और B का मास है 6 kg और वो यहाँ से आ रहा है VB से. Right, so we will write 4VA minus 6VB. Why minus? Why have I put a minus sign? Because the direction is opposite. माइनस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना. इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया. I've taken this side as positive. So if I've taken this side as positive, obviously this will become negative. So 4VA minus 6VB, and then 4VA should be equal to 6VB, and then VA, या इसको ऐसे रहने दो, 4VA is equal to 6VB, या इस तरह लिख सकते हो VA is equal to 6 over 4VB. ठीक है. I hope you're with me so far. अब उसने कहा कि kinetic energy का रेशो निकालो. So kinetic energy of A over kinetic energy of B is equals to 1/2 of MA into VA square over 1/2 of MB into VB square. Right? I hope you guys are with me. गौर से देखें, ये half और half कट जाएगा. So you will be left with MA over MB into VA over VB. इसको ऐसे भी लिख सकते हो whole squared. राइट. अब अगर आप वापस इधर आओ, इस जगह पे आके देखो, तो इसके अंदर आप लिख सकते थे इसको एज VA over VB is equals to 6 over 4. राइट. ये लिख सकते हो ना, VA over VB is equals to 6 over 4. MA कितना था? MA था 4. MB कितना था? 6 into, अब VA over VB की जगह आप 6 over 4 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो. Into 6 over 4 whole square. You solve this and you will get 1.5. Is it clear, everyone? I hope that this is clear. Okay. ये आ गया 1.5. कहता है use the information in B1 and B2 part 1 to determine the kinetic energy of block A. Please गौर से देखो कि इस स्प्रिंग के अंदर you had elastic potential energy. That elastic potential energy converted to the kinetic energy of A and the kinetic energy of B. Right? That elastic potential energy converted to kinetic energy of A plus and the kinetic energy of B. So I can say very safely that the elastic potential energy in the spring is equal to the kinetic energy of A plus the kinetic energy of B. I'm assuming
that there are no frictional losses, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है they're on a horizontal frictionless surface, ये लिखा हुआ है उसने. There's no energy loss. So I know that the elastic potential energy is equal to the kinetic energy of A plus the kinetic energy of B. So I can copy paste that over here. Now, the elastic potential energy that you had calculated in the previous part was how much? Elastic potential energy कितनी निकाली थी? 0.48, right? So 0.48 was your elastic potential energy, and that converted to kinetic energy of A plus kinetic energy of B. अब्दुल्ला आपने कहा है कि एम ए एंड एम बी का कैसे पता लगा? एम ए और एम बी का नहीं पता लगा. हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया. हमने कहा टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि वो दोनों ब्लॉक्स खड़े हुए अपनी जगह पे. हमने कहा जी जो ए है उसकी स्पीड वी ए और ए का जो मास है वो 4 है. हाँ अच्छा ये पूछ रहे हो मास कहाँ से पता लगा? क्योंकि मास गिवन है. मास गिवन है. मास ऑफ ए इज 4 kg, मास ऑफ बी इज 6 kg. सो मैंने मास ऑफ ए की जगह 4 लिख दिया और मास ऑफ बी की जगह 6 लिख दिया. मैंने स्पीड, अगर आपका ये सवाल है कि वी ए और वी बी कैसे निकाला, तो मैंने 4 वी ए माइनस 6 वी बी को इक्वल टू 0 किया और यहाँ से मैंने बस 4 वी ए इज इक्वल टू 6 वी बी लिखा. वी बी को इस साइड में ले गया और 4 को इधर ले आया, तो वी और वी बी इज इक्वल टू 6 और 4. अब्दुल्ला, आर यू विद मी? मलाइका, यस, इट विल बी अपलोडेड. सो बेसिकली आपने पिछले वाले पार्ट में क्या निकाला? आपने ये निकाल लिया है दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज 1.5. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, राइट? सो आप यहाँ पे लिखें 0.48 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ए प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी बी कितनी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओवर 1.5. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओवर 1.5. इस तरह भी लिख सकते हो. यू वांटेड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी को निकालो. कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन को यूज करके. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओवर 1.5. राइट दैट डाउन ओवर देयर and just solve this. And when you solve this, the answer that you should get is 0.29 joules. I hope that this is clear. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस तरह सॉल्व करेंगे 0.48 is equals to kinetic energy A into 1 plus 1 over 1.5 and just take everything else to the other side and you will be done. 0.29 is the answer to this part. Now, part 3. The blocks are released at time t is equal to 0. Calculate or sketch a graph to show how the momentum varies with time. सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक ए था इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच था. जिस स्प्रिंग की एक्सटेंशन पहले थी 8 सेंटीमीटर, फिर वो ब्लॉक्स करीब आ गए, वो स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम हो गई. मुझे ये बताओ कि ब्लॉक ए पे, सिर्फ ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, ब्लॉक ए पे जो फोर्स लग रही है was that constant or was that changing? The extension of the spring was changing, ये हमें मालूम है. Extension कम होती गई. So was the force on the block constant or was it changing? That is one question. Is the force constant or changing? एक ये सवाल. Secondly, block A का initial momentum कितना था? Was the block at rest? Was the block moving before the springs were released? What was the situation? So 2 questions. Is the force constant or changing? Second, what was block A's initial momentum? All of the answers are given in the question. So the force was not constant, Fatima. The force was changing. When the extension was more, the force was more.
then when the extension was less, the force would have been less. Eventually, extension 0, force 0. Do you understand? Do you understand this part, Fatma? कि the force was not constant. और अगर इसको और भी बेहतर तरीके से समझना है तो आप इस ग्राफ को देखो. ये देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट होती, ये मेरे पास फोर्स का ग्राफ है. If force was constant, I should have had a flat line. But you look at this graph is telling you as your extension is decreasing, the force is also, do you understand? As your extension decreases because the spring is being compressed, the force also decreases. So the answer is force is changing. In fact, force is decreasing. And the answer to the second question, block A's initial momentum. Block A was initially at rest. So ब्लॉक ए का जो मोमेंटम है इनिशियली वो होगा 0. सो ये तो समझ आ गई थी 0 से स्टार्ट करना है मोमेंटम को. दूसरी बात ये कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, जल्दी से बताएं. मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? Force. And your force is decreasing. So tell me, should this be a straight line or a curve? The gradient of this graph gives you force. हम कह रहे हैं force is decreasing. So should it be a straight line or should it be a curve? ये बता दें. Should it be a straight line? Should it be a curve? The answer is it should be a curve with a decreasing gradient, like that. Because the gradient of this graph gives you force and the force is decreasing. Akanksha, if it was a straight line का मतलब होना था force is constant because the gradient is constant. हम तो चाहते हैं भाई gradient कम हो, because अगर gradient decrease करेगा तो gradient decrease करने का मतलब ये है that the force will decrease and it matches our story. Fatima, do you understand? Momentum time graph का जो gradient है वो force देता है. Now you have already decided that the force is decreasing. So if the force is decreasing, the gradient of the graph should also decrease because gradient of the graph shows force. ये बात समझ आ रही है? Gradient of the graph क्या दिखा रहा है? Gradient of the graph force दिखा रहा है. अगर आप कहोगे straight line, मैं बना देता हूँ. अगर आप कहोगे जी मोमेंटम टाइम ग्राफ है, पीटी ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है, मैं मान लेता हूँ स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का मतलब है ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, राइट? अब ग्रेडियंट का देता है फोर्स, तो उसका मतलब फोर्स कांस्टेंट. भाई हमारी तो फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है, हमारी तो फोर्स डिक्रीज कर रही है. सही है. दैट इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी अ कर्व. ठीक है, चलो लेट्स स्पीड अप, वी डोंट हैव मच टाइम. What is meant by Doppler effect? The apparent change in frequency due to relative motion between the source and observer. That is Doppler effect. ठीक है. अब the whistle emits 950 hertz. This is the frequency. This is the speed of sound. Determine the maximum frequency. Maximum frequency तब जब वो sound source का मुंह observer की तरफ हो. This is where the observer is. So the observer here, maximum frequency when the sound source will be pointing towards the observer. So इसके लिए equation होती है f prime is equals to v over v minus us into f. So f prime, which is your maximum frequency, is equals to the speed of sound, which is 330 over 330 minus us. Us is the speed of the source, which is 7.5 into f, which is 950. So 330 over 330 minus 7.5 into 950. Let's solve. Please अपने कैलकुलेटर में खुद करें. Your answer would be 972 hertz.
ठीक है, कहता है डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द डिस्टेंस ऑब्जर्वर. सो जब वो यहाँ पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इज 972 हर्ट्ज विच इज अबव 950. और जब वो यहाँ पे जाना शुरू होगा the frequency will go below 950 because the source will be pointing away. सही है. So you will say that the frequency varies above and below 50 hertz. The frequency varies above and below 950 hertz. As the observer moves from P to Q, the frequency goes from above 950 hertz to below 950 hertz. क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया दैट यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू. दैट मीन्स कि आपका मुंह पहले बच्चे का मुंह जो था दैट वाज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सो फ्रीक्वेंसी वाज हायर, एंड देन बिकॉज ही टर्न्ड away from the observer, the frequency would have been lower, so the frequency goes from above 950 to below 950. The source, yes, the source is moving, the observer is stationary. Yes, Rami. So when the source will be pointing towards the observer, the frequency will be higher. When the source will be moving away in this direction, the frequency will be lower. Is it clear? Observer खड़ा हुआ है, source move कर रहा है. All right. I hope that this is clear. अच्छा, oh, as yes, as the source moves from P to Q. Thank you. As the source moves from P to Q, the frequency goes from above 950 to below 950. Thank you, Ramin. All right, चलें. Question number 5. Question number 5 में वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया. The electron continues to move in the same direction until it is brought to rest by the electric field. Now, this is very interesting कि वो रुक जाता है electric field में. So can you tell me if it stops in the electric field, what is the direction of the electric field? The electron is moving this way, but it stops. What should be the direction of the electric field? This is an electron. It is negatively charged and it stops. It's trying to go towards B, but it stops at B. It doesn't go ahead. Why? Because this electron must be experiencing an electric force in this direction. इसको इलेक्ट्रिक फोर्स फील हो रही होगी पीछे की तरफ, तभी तो रुक गया. वो जाने की कोशिश कर रहा था आगे. This was the direction in which the electron was moving, but the force on the electron was opposite. That is why it stopped. So मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगनी है तो ये वाली प्लेट कौन सी होनी चाहिए? शुड दिस प्लेट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस प्लेट. Should this plate be positive or negative? अच्छा, जब भी डायरेक्शन मांगे ना तो कभी भी ऑपोजिट ये नहीं लिखते. यू हैव टू टेल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप डाउन, इस तरह. सही है. So should this plate be positive or negative if the electron experiences an electric force in this direction? Should this plate be positive or negative? It should be, अरे अरे, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इस तरफ फोर्स कब मिलेगी? जब ये प्लेट पॉजिटिव होगी. ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी. नेगेटिव होगी तो ये तो रिपेल करेगा, फिर तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरफ होनी चाहिए थी. आयशा, मुर्तजा, आई होप यू अंडरस्टूड. Okay, this plate is going to be positive, and if this plate is positive, obviously this plate is going to be negative. Do you understand? That is why the electric force is pointing this way, right? On the electron. Electron negative है, वो इधर जा रहा है, लेकिन वो रुक गया है इधर जाने से. क्यों रुक गया है? क्योंकि उसको पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रही है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी.
अगेन उसने कहा you're moving in a straight line through a vacuum with a constant speed. अगर वो खुद कहता कि जी उसका वेट निकालो या वेट इनटू अकाउंट लो, तब रामीन हम उसका वेट इनटू अकाउंट लेते हैं. इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइक आप समझो कि एक टेबल को मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल. जब तक वो वेट को खुद ना कहे, हम या मैथ्स ना दे या इस तरह की बात ना करे, तब तक हम उसको इनटू अकाउंट ले लेते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जी ए टू बी. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? राइट टू राइट कह लो या ए टू बी कह लो. सो लेफ्ट टू राइट लिख सकते हो या ए टू बी लिख सकते हो. दोनों में से कोई सी एक चीज लिख दो. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो मैग्नीट्यूड डिसेलेरेशन, हमें स्पीड मालूम है जिस स्पीड से वो आया. हमें पता है बी पे वो रेस्ट पे आ जाता है, बी पे वो रुक जाता है. इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. हमें डिस्टेंस मालूम है. सो विच इक्वेशन एम आई यूजिंग ओवर हियर? आई एम यूजिंग 2as is equals to v squared minus u squared, right? So 2 times a times s, the distance is 2 centimeters, so 2 into 10 to minus 2 is equals to, finally I'm at rest, and my initial speed is 1.5 into 10 to the power 7 whole squared. Solve it and tell me what the answer is. 1.5 into 10 to the power 7 whole squared divided by 2 into 2 into 10 to the minus 2. Your deceleration should be minus 5.6 into 10 raised to the power 15. So 5.6 into 10 raised to the power 15. That should be your answer. All right. Now, what is the electric field strength? Electric field strength क्या होता है जी? Electric force per unit charge. Force is mass times acceleration, right? Mass of electron is given to you in the data booklet, 9.11 10 to the minus 31 into 5.6 into 10 raised to the power 15. Multiply. I am doing it. You also do it. The force turns out to be 5.12 into 10 is power minus 15 newtons. Can somebody confirm? Is this the right force? Is this the right force? What is the force? I will believe my answer. 5.12 10 to the minus 15 divided by the charge is going to be 1.6 into 10 is power minus 19. तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 3202.7.3, which is 3.2 into 10 is to the power 4 volt per meter. That is the electric field strength. ठीक है. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई, the last part of this question says the electron is at point A at t equal to 0. So that means at point A it had a speed. Sketch the graph of how the velocity varies until it reaches point B. Point B pe it is at rest. Speed is 0. So I'm starting at this point and I'm ending at this point. Should I make a straight line or a curve? Please, अब आप पीछे वाला जरा क्वेश्चन देखो. मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में समझाया भी है कि आपने सारी चीजें कैलकुलेट की हुई है. टेल मी, ये देख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है. वो देता है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. नाउ you've already done all of the math. Just tell me, should this be a straight line or a curve and why? कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ आ गई है कि नहीं आई. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, और पीछे वाले पार्ट से देख के बताना. रामीन यू राइट, शाबाश, वेल डन. स्ट्रेट लाइन, वेल डन फार्मा. It'll be a straight line down because deceleration is constant. You calculate a value which was 5.6 in 10 to the power 15. Straight line because exactly. So आपको कभी भी ग्राफ बनाने में मसला हो, प्लीज उसका ग्रेडियंट देखा करो और ग्रेडियंट को लिंक किया करो विद प्रीवियस पार्ट्स. ग्रेडियंट इस ग्राफ का क्या देता है? प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्या निकाला है. ये वाला पार्ट अगर कभी समझ नहीं आता, उसका प्रॉब्लम ये हो सकती है हमजा
कि आपको इस ग्राफ का ग्रेडियंट तो पता चल जाता है एक्सेलरेशन, अब आप पीछे से देख नहीं रहे कि भाई जो पीछे मैंने एक्सेलरेशन निकाली है क्या वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट है। अगर तो वो कांस्टेंट है तो मुझे बता दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बनना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ग्रेडियंट शोज एक्सेलरेशन, तो खतीजा, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या डिसेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड ग्रेडियंट इज शोइंग डिसेलेरेशन, मैं कह रहा हूँ डिसेलेरेशन कांस्टेंट है, ग्रेडियंट डिसेलेरेशन शो कर रहा है, तो ग्रेडियंट को भी कांस्टेंट होना चाहिए ना। अब अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो कर्व बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ये आपने सवाल पूछना है। सही है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ जब भी ये वाले जाओ। ड्यू टू वैक्यूम इट्स कांस्टेंट, यहाँ पे उसने निकलवाया ना। वैक्यूम, वैक्यूम में तो ग्रेविटी हम लेते हैं ना, यहाँ पे तो ग्रेविटी को ले ही नहीं रहे। यहाँ पे तो हमने ये डिसेलेशन कैलकुलेट किया बच्चे। पीछे वाले सवाल में वो जो प्रोजेक्टाइल वाला था उसमें ग्रेविटी की वजह से हम कह रहे थे एक्सेलेशन, वैक्यूम की वजह से कह रहे थे हम एक्सेलेशन कांस्टेंट है हमजा। जो पीछे वाला सवाल था प्रोजेक्टाइल वाला, उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले रहे थे जिसकी वजह से हम कह रहे थे एक्सेलेशन कांस्टेंट है। इस सवाल में हमने निकाल लिया ये यूनिफॉर्म, ये देखो उसने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स लगेगी इसके ऊपर। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट डिसेलरेशन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what is meant by electric current? It is the flow of positive charge carriers. What is meant by potential difference? Work done per unit positive charge. Now, प्लीज बड़े गौर से देखिएगा सवाल को। पावर सप्लाई 8.7 वोल्ट्स की, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये 3 बल्ब। इस पावर सप्लाई के अंदर जो पावर सप्लाई से जो करंट आ रहा है टू द बल्ब्स, दैट इज 0.3 एम्पेयर। उसने कहा द फिलामेंट लैंप्स आर आइडेंटिकल, IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर वन ऑफ द लैंप्स इज शोन। अब सबसे पहले तो आप ये करो कि आप यहाँ पे 0.3 एम्पेयर पे जाओ और 0.3 एम्पेयर पे जाके देखो कि एक बल्ब को वोल्टेज कितना चाहिए। दिस इज द वोल्टेज दैट वन बल्ब नीड्स। So this is 2.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. So one bulb, this is a very important question. One bulb needs 2.5 volts. The current in one bulb is 0.3. So can I find the resistance of the bulb? Yes, I can. The resistance of the bulb is going to be 2.5 over 0.3. Karo? 2.5 over 0.3. So the resistance of the bulb is going to be 8.33 ohms. इस तरह निकलेगी अगर वो निकलवाना चाहे आपसे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो नाउ वो यहाँ पे कहता है शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कनेक्टिंग वायर इज 2 ohms। वो कहता है वायर की रेजिस्टेंस बताओ। अब आपको ये समझ आ गई कि एक बल्ब को चाहिए था 2.5 वोल्ट, तो दूसरे बल्ब को भी चाहिए होगा 2.5 वोल्ट, तीसरे बल्ब को भी चाहिए होगा 2.5 वोल्ट। तो ये 3 बल्ब्स को मिलाकर टोटल वोल्टेज कितना चाहिए? 3 बल्ब्स को, द 3 बल्ब्स नीड 7.5 volts. How much are you supplying? You are supplying 8.7 volts. How much are the bulbs consuming? The bulbs are consuming 7.5 volts. So why is there a difference? There's a difference because that voltage is being kept by the connecting wires. Do you understand? 8.7 वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो, बल्ब जो तीनों ले रहे हैं वो 7.5 ले रहे हैं, तो भाई दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स भी वोल्टेज ले रही हैं। What is the voltage in the wires, if I ask you? The voltage in the wires will be 8.7 minus 7.5, which is 1.2 volts, right? 1.2 volts. अब अगर मैं आपसे कहूं what is the resistance of the wire or the connecting wire of each connecting wire, तो आप ये कहेंगे जी 1.2 वोल्ट है divided by
0.3 which is 4 ohms, but ये 1.2 वोल्ट एक वायर के अक्रॉस है या दो के अक्रॉस है? This is one wire and this is the second connecting wire. So this 4 ohms is for one or two wires. This 4 ohms that you calculated, this is for two wires. So what is going to be the resistance of one wire? That is going to be 4 ohms divided by 2, which is 2 ohms. ठीक है, क्योंकि आपने जो 1.2 वोल्ट निकाला है, ये 1.2 वोल्ट 8.7 और 7.5 को माइनस करके आ गया। तो इसका मतलब है 1.2 इस वाली वायर और इस वाली वायर दोनों को मिल रहा है। सो जब आप 1.2 वोल्ट वायर के क्रॉस वोल्टेज लोगे तो दोनों वायर में से करंट कितना गुजर रहा है? 0.3। तो 4 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स। सो वन वायर की रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम्स। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दिस पार्ट। ठीक हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर विल बी 2 ओम्स। कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल डज नॉट वेरी, sketch the IV for one of the connecting wires. IV for one of the connecting wires. अब देखो ये करंट वोल्टेज ग्राफ है। करंट वोल्टेज ग्राफ का मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या देता है? करंट वोल्टेज ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? जल्दी बताएं। करंट वोल्टेज ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस देता है या वन ओवर रेजिस्टेंस देता है? करंट वोल्टेज ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या देता है? रेजिस्टेंस या वन ओवर रेजिस्टेंस? वन ओवर रेजिस्टेंस। Agreed? The gradient of a current versus voltage graph gives you 1 over resistance. Not resistance Ali, 1 over resistance. VI ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस देता है। अब हमने निकाली कि रेजिस्टेंस 2 है हमारे वायर की, तो हमारे वायर का जो ग्रेडियंट बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.5। डू यू एग्री कि वायर की जो लाइन है उसका ग्रेडियंट शुड बी 0.5, क्योंकि वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 2 है। हमें IV ग्राफ बनाना है वायर का, तो वायर का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? वायर की लाइन का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? 0.5, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस जो है वो 2 है। सो 0.5 ग्रेडियंट आ गया। आपको पता है कि ग्रेडियंट जो होता है वो होता है राइज ओवर रन। ग्रेडियंट है 0.5, ग्रेडियंट है 0.5। राइज एक्सिस पे आई हैव गॉट करंट, रन एक्सिस पे आई हैव गॉट वोल्टेज। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि करंट मैंने 0.4 रखना है, मुझे पता नहीं है 0.4 ये वाली लाइन बन जाती है, 0.4 यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, कहाँ पे रखूं कि लाइन जो बनाऊं स्ट्रेट उसका ग्रेडियंट 0.5 हो, ये कैसे निकालूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा करंट रख लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय रन करते हैं। तो रन आप जब निकालोगे वो आएगा 0.4 और 0.5 विच इज 0.8। सो दैट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे 0.4 सिलेक्ट करना है तो एक्स एक्सिस पे आपने 0.8 सिलेक्ट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेडियंट आ गया था हमारे पास। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 0.5 ग्रेडियंट वाली लाइन बनाऊं कैसे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 0.5 ग्रेडियंट की लाइन बनाऊं कैसे? तो उसका आसान तरीन हल ये है कि आपने जो एक करंट कोई भी डिसाइड कर लो, 0.3 डिसाइड कर लो, 0.2 डिसाइड कर लो, 0.1 डिसाइड कर लो, कोई एक करंट डिसाइड, मैंने 0.4 डिसाइड कर लिया कि 0.4 करंट पे देखना है वो पॉइंट कहाँ पे बनेगा। 0.4 तो कहीं पे भी इस लाइन पे कहीं पे भी 0.4 है। सो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी उस टाइम पे वो मैंने निकाली। रन निकालना है, ग्रेड की वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी है, रन टर्न्स आउट टू 0.8। सो व्हाट आई डू ओवर हियर is this is 1, this is 0.9 and this is 0.8. So this is the point and this is the straight line. Is this clear? ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनी है इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0.5 है। समझ आ गया सबको ये कि मैंने 0.5 की ग्रेडियंट की लाइन कैसे बनाई है? सो ग्रेडियंट 0.5 था, ये तो कंफर्म हो गया था। अब 0.5 ग्रेडियंट की लाइन कैसे बनाई है? कोई भी करंट की वैल्यू भाई अपनी मर्जी की, 0.4 पकड़ो या 0.3 पकड़ो, उसको राइज में डाल दो और रन निकाल लो।
जो रन आए उस रन पे जाओ। जैसा मैं यहाँ पे .8 पे गया, मैं यहाँ .8 पे गया और मैंने .8 और .4 पकड़ा और मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। सही है? आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द आई वी फॉर वन ऑफ द वायर। वायर के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। कैलकुलेट द पावर लॉस इन वन ऑफ द वायर्स। पावर लॉस कैसे निकालेंगे? पावर लॉस इज गिवन बाय I square R, right? अब current in the wire was 0.3. 0.3 square into resistance of the wire is 2. So 0.3 का square into 2 करो, your answer would be 0.18. सही है? So this is the power loss in one of the connecting wires. कहते हैं some data for the connecting wires is shown below. Cross sectional area given है, resistivity given है, number density given है. Calculate the length of the wire. So resistance is rho L over A. You want to calculate the length, so that is going to be R into A over rho. Resistance of one of the wire is to one of the wires. क्योंकि उसने कहा है कि length of one of the wire चाहिए, तो resistance of one of the wire is 2. The area of one of the wire is 0.4 into 10 is to power minus 6. ये millimeter square को meter square में convert करना है. Divided by the resistivity, which is 1.7 into 10 to the power minus 8. Please solve करें. Hadia, your question is, if is gradient always 1 over R when current is? Yes, always. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. If I have a VI graph, gradient is resistance. If I have an IV graph, gradient is 1 over resistance. ठीक है? Please यहाँ से length calculate करें. So 2 into 0.4 into 10 to the power minus 6 divided by resistivity is 1.7 into 10 to the power minus 8. It should be 47 meters. 47.05 something आएगा, 47 लिख दे, 2SF. Next, calculate the drift speed. I is equals to NAVE. The current in the wire was 0.3, right? The number of free electrons density is 8.5 into 10 to the power 28 times area 0.4 into 10 to the power minus 6 times the drift speed times the charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. So यहाँ से आपकी drift speed निकल आएगी. Your drift speed would turn out to be 5.514 into 10 to the power minus 5, which is 5.5 into 10 to the power minus 5. All right. I hope that this is clear so far. And the final question. Proton, neutron breaks into a proton, electron, and an antineutrino. So this is an anti-neutrino. State the name of the group. Beta negative or anti-neutrino या neutrino किस group में आते हैं? Which family? What's the name? Quickly tell me in the chat, please. What is the name of this family? They're called leptons or lepton. The quark structure of the neutron. Yes, quark structure of the neutron. That is up, down, down. The change of the quark structure when the neutron decays. So a neutron converts to a proton, right? So up, down, down converts to up, up, and down. So yeah, so this was some revision that I wanted to do with you. Now, some important topics which you must revise are errors and uncertainties. You must revise kinematics. You must revise your stationary wave and superposition.
इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह का मैंने अभी सवाल कराया है इससे मिलता जुलता, इसके अंदर आपको वायर भी आ सकती है और रेडियो एक्टिविटी, मतलब these are confirmed topics, so make sure that you are looking at them today. एरर्स और अनसर्टनिटीज प्लीज पक्के करके जाना, और काइनेमैटिक्स तो लाजमी, एंड वेव्स के अंदर, और बाकी तो हमने यहाँ पे कवर किया है. So inshallah, tomorrow's paper is not going to be hard. Don't worry, it's not difficult. It's going to be fairly straightforward. Or derivations that can come, आपकी प्रेशर की डेरिवेशन आती है जिसमें आप रो जी एच प्रूफ करते हो. उसके बाद आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करना आ सकता है. Estimates are a very small part, Chashman. Very very small part. मतलब कुछ एस्टिमेट्स आपको बेसिक्स तो जो मैंने कराए हैं वही, बाकी आई डोंट थिंक देयर वुड बी मोर मेनी एस्टिमेट्स. ऑलराइट. जैन बड़ा शरारती बंदा है. लव यू जैन. और ये बाय द वे जो आप ये सारा सेटअप देख रहे हो ना, ये जेनेमेटिक्स ने ही बनाया हुआ है. ये अपनी हैवी बाइक पे उड़ते हुए आते हैं और सबको उड़ा के चले जाते हैं. ठीक है. सो अब अभी आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वील डू पेपर 5. ऑलराइट. चलें. पेपर 4 भी तो आसान ही था, मुश्किल थोड़ी था. चलें जी. Perfect. Thank you so much, everybody. Have a good day. Take care. I'll see you in half an hour. Khuda Hafiz. Best of luck.